A very good afternoon, everyone. So, we were discussing the topic work culture. We had completed that discussion yesterday on the topic work culture. What we will be doing is, before we move on, in the year 2025, there was a question that was asked on the topic work culture. So, let us take up that question, okay? And then we will move on from there, okay? Please write this down. This was the question that was asked. The no the basic demand of the question was this, okay? Code of ethics is an important component of an effective work culture. Suggest measures that can be taken to change or develop an effective work culture. Okay? This was the question that was asked. Now, how do we write an answer to this question? What is exactly the way we approach this? Introduction is about what? In introduction, we have to write about what exactly is the correlation between code of ethics and work culture. Okay? Code of ethics and work culture. What is the correlation? What is the correlation? Now, we have yet not talked about this. Okay? We had not discussed this because this part, that is code of ethics, is not what we have discussed as of yet. That is supposed to be the next topic that we take up, which is code of conduct and code of ethics. Okay? Anyways, but because this is a question related to work culture and partly we have discussed this, so let us do what? Let me just give you a brief idea as to what is the correlation between code of ethics and work culture. In very simple terms, what is code of ethics? Code of ethics is the values and principles of ethical conduct in an organization.
What is code of ethics? So this is what code of ethics is. Okay, code of ethics stands for, in detail we will be talking about it. For now we have to understand that code of ethics is basically the values, the principles of ethical conduct in the organization or by the members of the organization. Clear? Specifically when we talk about, no, specifically when we talk about a bureaucratic organization, it expects civil servants to behave morally. Now, the question is that what organization wants, that is how the organization wants the civil servants to behave, what values the civil servant should follow, what principles civil servants should follow in that organization. Where is it stated? It is stated in the organization's code of ethics. Where is it stated? It is stated in the organization's code of ethics. Okay, that is what code of ethics stands for. Is this part understood? Yes or no? Now, come to the second part, work culture. Work culture. And how did we define work? Beliefs. It is about attitudes which are basically followed by members of a organization. Okay. So work culture also includes values, it includes values of the organization. It includes values of the organization. And what is the correlation? The correlation is that work culture provides guidelines of ethical conduct, it provides guidelines of ethical conduct, and work culture is about how work culture also determines, it does what? It also determines how an individual behaves or what actions an individual performs in an organization. What action an individual performs in an organization. ठीक है? So, what is the correlation? Again, I am repeating this. I am repeating this once more. The question, look at the question, read the question. The question demands that what is the relationship between, as it says, code of ethics is an important component of an effective work culture. So, code of ethics is a part of work culture of an organization. That is what it says. And then the second part of the question says what measures can be taken up to develop an effective work culture. Okay. What can be done for an effective work culture. Okay. Now, how do we introduce this particular question? The introduction of this question should answer this part. Code of ethics is an important component of any effective work culture. So how can code of ethics, how will code of ethics be correlated to work culture? Now see, what does code of ethics provide for? So code of ethics is about the values and the principles the organization wants its members to follow in that very ऑर्गेनाइजेशन, है ना. कौन से प्रिंसिपल्स हमारे बिहेवियर को गाइड करने चाहिए या एम्प्लॉय के बिहेवियर को गाइड करने चाहिए, कौन से ऐसी वैल्यूज हैं जो किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को गाइड करना चाहिए. दैट इज बेसिकली व्हाट कोड ऑफ एथिक्स इज. ठीक है. सो व्हाट प्रिंसिपल्स, व्हाट वैल्यूज. क्लियर.
That means code of ethics determines behavior. It influences what? It influences our behavior or the. How is it related to work culture? It is related to work culture because work culture is what? Work culture also includes of what values the organization follows is a part of the work culture. And similarly, like code of ethics, even the work culture determines what actions or what behavior the individual performs in the organization. So there is a correlation, and that is the reason why the first statement, which is what? That code of ethics is an important component and it's an important part of work culture. Okay? You have to explain this in the introduction of your answer. Now comes the body part of your answer, and the body part of your answer does what? The body part of your answer has to include what measures can be taken. What would be the measures? So what steps can be taken? What measures can be taken for an effective work culture or for devising an effective work culture? Okay. Now, we know what are the important components of an effective work culture. Did we talk about it yesterday? Yes or no? We did discuss this very idea as to what are the important components of effective work culture. So what will we do? We will base our answer on that. Clear? So effective components of work culture would include, first of all, we need to have a trained and competent staff. Needs to be proper training. There needs to be proper focus on the competence of those who are the members of that very organization. Secondly, meritocracy, absolutely. We had talked about meritocracy also. Meritocracy being an important component. Then we had talked about the environment of that very organization. We had also discussed trust and respect. Okay. So because of their position, they get lot of followers also. बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं. और इस चीज का एक मॉनिटरी इंपैक्ट भी होता है. There is a monetary side of this as well. But because the code of conduct guiding civil servants as of now, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो बनाए गए थे वो 1964 में बनाए गए थे. रेलवे सर्विस रूल्स जो बनाए गए थे वो भी 1960s के हैं. तो 1950s, 60s, 70s के जो रूल्स थे, कोड ऑफ कंडक्ट के जो एस्पेक्ट्स थे, इट डज नॉट, ऑफ कोर्स डज नॉट टॉक अबाउट सोशल मीडिया. सो राइट नाउ code of conduct is silent as to what should be the behavior of civil servants on social media. It is silent there. But this is being talked about, that is it legitimate? Is it justified for civil servants to be present on social media? Why? Because they can use their office, their position, and they could have a monetary consequence of it. There can be a monetary consequence of that very idea. इसीलिए इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि क्या सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होना देना चाहिए या देयर शुड बी सम रेगुलेशंस पोस्ट रिलेटेड टू दैट. क्योंकि मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्लियर रेगुलेशन है. इफ यू आर अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यू कैन नॉट हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट. आपको प्रोहिबिटेड है. यू कैन नॉट हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट. That is there related to armed forces, but that is not, that has not been extended to civil servants. तो क्या ऐसा करना चाहिए? That is today being debated, है ना. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे
बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो अपने ऑफिस में रील्स बनाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं अपने ऑफिस में रील्स बनाते हैं। मान लो दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज, तो वो अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते वक्त वीडियोस बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं, ठीक है। नाउ on the face of it, it does not seem to be anything wrong with it कि ठीक है, what is wrong with it, everyone knows where they work or what they do, तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि सिविल सर्वेंट्स हैव टू फॉलो द वैल्यू ऑफ एनोनिमिटी, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स का ये काम नहीं है। सिविल सर्वेंट्स का काम नहीं होता है मीडिया अटेंशन, मीडिया एड्रेस। दिस इज नॉट व्हाट सिविल सर्वेंट्स आर सपोज टू डू। दिस इज द जॉब ऑफ द पॉलिटिकल क्लास। पॉलिटिकल क्लास जो है उनको हर 5 साल में लोगों के पास जाना है और वोट मांगने हैं, तो वो पब्लिसिटी, ये सारी चीजों की जरूरत उनको पड़ती है, ना कि किसको? एक सिविल सर्वेंट को। तो ये क्वेश्चन है दैट doesn't this violate anonymity, and if it violates anonymity, should not the government do something about it? इस बात को काफी ज्यादा डिबेट किया जा रहा है। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो अ एथिकल डिलेमा, सो यू माइट गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वेरी आइडिया एज वेल। लेकिन वो हम नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल डिलेमास का, उसमें हम इसे जरूर टेकअप करेंगे। इज इट अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? ठीक है। सो दिस इज द स्कोप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। फाइनली द लास्ट पॉइंट, द थर्ड पॉइंट, दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ code of conduct. The last point is scope of code of conduct. Write down third point, scope of code of conduct. Scope of code of conduct. Scope of code of conduct. ठीक है, लिखो। One point has to be written here. Code of conduct is enforceable. Code of conduct is enforceable with penalties for its violation. With penalties for its violation. Its violation. Full stop. What does that mean? If you violate the provisions of whatever is mentioned in the code of conduct, there can be penalties imposed on it. ठीक है, देखो एक इंसिडेंट हुआ था, whether I've talked about this incident I don't remember, but there was an incident in Kolkata in 2019. इंसिडेंट क्या था? इंसिडेंट ये था कि सीबीआई had landed in Kolkata. Some officers of the CBI had landed in Kolkata. They were investigating a scam. It was called as the Sharda scam, which had happened in West Bengal, and they were investigating that scam. So they wanted to question the police commissioner of Kolkata. And for that, they went to the official residence of the police commissioner. और उसको लेकर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हंगामा हुआ, क्योंकि he was a law and order official. The CBI coming to question him without maybe informing any kind of pre-information, and the political party in power then, that was the TMC, क्योंकि वो opposition में थे, तो उन्होंने CBI और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा कि you are interfering with the law and order in the state, which is not what you are supposed to do, because law and order is a state subject. It's a state subject, so you are not supposed to do this. उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, सीबीआई को उनके घर पे ही बंद कर दिया गया एंड ऑल ऑफ इट, ये सारी चीजें। अल्टीमेटली व्हेन ऑल ऑफ दिस ड्रामा एंडेड, then what happened was that Mamata Banerjee, who was the then chief minister of West Bengal, initiated a dharna against the central government in Kolkata, and she asked the support of all the opposition party members
to support her as the central government was trying to interfere with the state politics. ये उनकी बात थी और उन्होंने एक धरना शुरू किया. ठीक है, पॉलिटिकल, it's a political party and the political party does that. उन्होंने एक धरना शुरू किया और बहुत सारे ऑपोजिशन के जो लोग थे वो भी वहां पर पहुंचे एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड. बट देयर इज वन थिंग दैट that was highlighted a lot. वो क्या था? उस पर्टिकुलर स्टेज पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी प्रेजेंट थे. सर्विंग पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता was also sharing the stage with Mamata Banerjee. Now this is a violation of the conduct rules because civil servants are supposed to follow the value of neutrality and therefore they are not supposed to be a part of any political event. If it is organized by a political party against maybe the ruling party, as we already know that civil servants are not supposed to criticize the government. They are not supposed to criticize the government. So they are not supposed to be members or participating in such events. ऐसा नहीं था. And he was not there just to provide security or something like that. ऐसा नहीं था, क्योंकि वो अपने पूरे यूनिफॉर्म में वहां पर बैठे हुए थे. पूरा यूनिफॉर्म मतलब होता है जहां पर उनका मेडल वगैरह लगा रहता है और वो पूरा एक ब्रिटिश एरा से एक यूनिफॉर्म कैरी करते हुए हम आए हैं और वो यूनिफॉर्म रहता है. वो जनरली कोई भी आईपीएस या कोई भी पुलिस ऑफिसर उस यूनिफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ उस पूरे यूनिफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ वो तब पहनता है जब कोई स्टेट का इवेंट है. जैसे मान लो कोई परेड है या कुछ इस तरह की चीजें, तब आप देखोगे कि वो पूरे यूनिफॉर्म में वहां पर जाएगा. अदरवाइज दे डोंट वेयर दैट यूनिफॉर्म. ही वॉज वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म एंड ही वॉज शेयरिंग द स्टेज विथ ममता बनर्जी. नाउ दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट which is a violation of the value of neutrality. उनको एक नोटिस सर्व किया गया by the central government, asking him to explain his actions as to why did you do that, है ना, आपने ऐसा क्यों किया. इस चीज को एक्सप्लेन करते वक्त उनसे पूछा गया. Why? Because it's a violation of code of conduct. And what you have written, last point पढ़ो, क्या लिखा आपने? It is enforceable, which means if you are violating what the code dictates, you can be punished. There can be disciplinary measures, there can be disciplinary action that can be taken against that. ठीक है? So this is basically what the code of conduct and the features of code of conduct is. Clear है? Give us a heading here. Write down importance of code of conduct. इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. देखो, हमने न्यूट्रलिटी को डिस्कस किया है एज अ फाउंडेशनल वैल्यू और सिविल सर्विसेज में न्यूट्रलिटी को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है. बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है. सो एनी ऑफ योर एक्शंस which can be seen, which is seen as a violation of neutrality, if it is seen as a violation of neutrality, it is subjected to punishment. इसीलिए आप देखोगे कि civil servants are not supposed to contest elections. Why? Because they are supposed to remain politically neutral. And the day you start contesting elections, what happens as a result of it? It means you have crossed that line of neutrality. ये कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल था. ओके, एनीवेज, लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ code of conduct. For you, tell me, according to you, why do we need a code of conduct and what is the importance of it? Why do we need a code of conduct? बताओ मुझे, आपके हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट क्यों जरूरी है? कोड ऑफ कंडक्ट क्यों होना चाहिए? To ensure neutrality. Okay, to rather than saying neutrality, you can actually include all the values in one itself, and you could say that it is to ensure foundational values, है ना?
It is to ensure foundational values. ठीक है. Anything else? हाँ. Effectiveness of organization, to ensure that organizations do what? Organizations act effectively, professionally. है ना? That is the reason why. No, that is the reason why we also need the code of conduct. ठीक है. Anything else? Yes. Part of effectiveness, part of that. Anything else? To maintain rule of law and decorum. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. To ensure that rule of law is what guides the actions and the behaviors of a civil servant. देखो, in just you could say that one very important objective that it serves is to ensure answerability and accountability of civil servants. Think of a hypothetical situation where there is absence of any code of conduct. क्या होगा? सिविल सर्वेंट्स अपनी मर्जी से बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट एनी चेक ऑन देयर बिहेवियर, विदाउट एनी चेक ऑन देयर बिहेवियर, है ना? कोई चेक नहीं है. आज आपके ऊपर एक चेक है. अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जो सिविल सर्विस कोड को वायलेट करेगा, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, यू विल बी हेल्ड आंसरेबल फॉर योर एक्शंस. More importantly, public trust. Code of conduct does what? Code of conduct ensures that people trust the bureaucratic organization or government organizations as per se. Why? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की वजह से जब सिविल सर्वेंट्स को पनिश किया जाता है, तो लोगों को क्या लगता है? व्हाट इज द परसेप्शन दैट पीपल हैव? द परसेप्शन दैट पीपल हैव इज दैट ओके, if you are in violation of the values, the desired actions, etc., it does not matter who you are, you will be punished. It does not matter whoever you are. There it will be considered as a punishable offense. So what does it do? It provides enhances trust as well. इसके साथ साथ हमने एक डिस्कशन किया है गाइडलाइंस. व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट इज गाइडलाइंस ऑफ बिहेवियर, एंड दैट इज वेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कम्स. देखो, एज अ सिविल सर्वेंट समटाइम्स you will be in a state of dilemma where you would not be able to understand what is the right action to be performed. You will not be able to understand. You have different choices in front of you, and you will not be able to choose which choice according to you is the most appropriate, the best choice that is there. You will not be able to choose that. Why? Because you feel that every choice is similarly important. तो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आप फेस करो. ऐसा भी हो सकता है that your personal interest is in contradiction to your professional interest, hence you are not able to choose. And this is where code of conduct comes, because code of conduct provides you guidelines how you are supposed to act when ethical dilemmas approach. अगर ethical dilemma के situation में हो तो आपको क्या करना है, कोड ऑफ कंडक्ट आपको बताता है कि देखो ये बिहेवियर है, आपको ये बिहेवियर परफॉर्म करना है, तो इस बिहेवियर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो. अगर आप इस बिहेवियर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, तो अगर उस डिलेमा के स्टेट में कोई भी ऐसा एक्शन है जो इस बिहेवियर को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते हो. सो इट एक्ट्स एज अ वेरी इफेक्टिव गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर. ठीक है, तो व्हाट आर द स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस? I will dictate them one by one, don't worry. ठीक है, just summarizing my discussion. First, we have talked about accountability, okay, or some foundational values. We have talked about that. Secondly, we have talked about it as guidelines of conduct. We have talked about it as efficiency and professionalism
What does it ensure? It ensures efficiency and also professional conduct. So professionalism. We have talked about how it strengthens public trust. How it does what? How it strengthens public trust. It maintains public trust. That is what it does. है ना? We have in guidelines of conduct, we have talked about professional versus personal. We have talked about ethical dilemmas. We have talked about ethical dilemmas, that in a state of ethical dilemma, what can be done. Okay? So this is a summary of what is the importance of code of conduct. Okay? Write down one by one. First point, code of conduct ensures accountability. Code of conduct ensures accountability. Within this, it ensures clear standards of behavior. Within this point, it ensures clear standards of behavior. Standards of behavior, ensuring that public officials are held. Ensuring that public officials are held accountable for their actions. Held accountable for their actions. Second point, it prevents corruption and misconduct. It prevents corruption and misconduct. Comma, unethical practices such as bribery, unethical practices such as bribery, favoritism, nepotism, maintaining professional integrity. Professional integrity. Full stop. Third, provides clear guidelines of behavior, ensuring professional behavior, across organizations. Professional behavior across organizations. And resolving dilemmas in civil servants' conduct. Next, maintaining public trust by upholding
highest standards, highest standards, highest standards of values and behavior in building public confidence in government and its institutions full stop. The last aspect of code of conduct is challenges. Last aspect is challenges. What are the challenges for its implementation? देखो, there are a few very prominent challenges, one of which we have already discussed as well. Generally, जो कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सर्वेंट्स का है वो आउटडेटेड है, क्योंकि 1960s का प्रोडक्ट है वो. So you will find that these documents that is there, code of conduct, it is not something which has been replaced, or it is not something which has evolved. So it is something which is suited to what was appropriate during the 1960s, but not necessarily today. Things have changed today. There is a huge difference in how governance worked in the 1960s in comparison to how government works as of today. Very different. Secondly, ambiguity. Code of conduct, one of the important features of code of conduct was where it was mentioned as an objective specific guidelines. Wherever the specificity is missing, it becomes an ambiguous document. जहां पे भी एम्बिग्विटी है उसको एनफोर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. एग्जाम्पल से बताता हूं. एग्जाम्पल यह है कि अगर आप सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में देखोगे तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विच इज मोर इन वैल्यू देन 5,000 रुपीज. 5,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का कोई भी गिफ्ट सिविल सर्वेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब देखो, दिस इज वेरी एम्बिगुअस. व्हाई? बिकॉज 5,000 you have done what? You have allowed a certain parameter कि इतना, इससे ऊपर नहीं. मतलब आप एक तरफ से ये कह रहे हो कि इतने की वैल्यू की चीज करप्शन नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा की अगर वैल्यू है तो हो सकता है वो करप्शन हो जाए. नाउ दैट डज व्हाट? दैट क्रिएट्स एम्बिग्विटी. और जहां पर भी एम्बिग्विटी है वहां पर एनफोर्समेंट का इश्यू आएगा. यू कैन नॉट objectively enforce anything which is not objective. So that is very much an issue. Third, there is inconsistent application of it. Inconsistent application मतलब किसी जगह पर applicable है लेकिन किसी जगह पर applicable नहीं है. मतलब ऐसा लॉ नहीं कहता है. This is how it actually happens. Like we talked about a particular case, a case in which the Kolkata police commissioner was given a notice, sent a notice for his political activities. For his political activities. But he is not the only civil servant doing so. है ना? He is not the only civil servant doing so. There are so many other civil servants, and all these civil servants do involve themselves in number of political activities.
आप देखोगे नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म इज सो प्रोमिनेंट इन सिविल सर्विसेज। आप ये भी देखोगे कि कितने ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टूज की तरह काम करते हैं, मतलब उसी का, उस पॉलिटिकल पार्टी का ही काम वो करेंगे। महाराष्ट्र में केस आया था जहां पर कुछ साल पहले, और अब महाराष्ट्र के जो पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे वो अभी जेल में है, और उनका क्या काम होता था, उन्होंने पुलिस को एज अ टूल यूज किया। एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ही यूज्ड टू स्पेसिफिकली have targets for the state police to collect money which would go to their political parties donation। ये पुलिस का काम हुआ करता था, और पुलिस एक तरीके से क्या करती थी, और जो आई डोंट नो हाउ एग्जैजरेटेड द फिगर में भी, लेकिन जो डिस्कशन हो रहा था वो कुछ 100 करोड़ का था कि आप महीने का 100 करोड़ रुपए कलेक्ट कर रहे हो जो पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जा रहा है, और उसमें से कुछ पैसा होम मिनिस्टर भी ले रहे हैं। और पूरी पुलिस क्या कर रही है, दे आर बेसिकली एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर आप देखोगे पुलिस और अदर सिविल सर्वेंट्स, दे आर वेरी मच politically aligned, they take up activities which are otherwise a violation of code of conduct। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ लोगों को पनिश किया जाएगा लेकिन कुछ लोगों पर कोई एक्शन नहीं होगी। इसी को मैं कहता हूं इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन। देयर इज इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन इज देयर। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। क्लियर। चौथी बात क्या है, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस टू एनी अकाउंटेबिलिटी मेजर्स। ब्यूरोक्रेसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, ब्यूरोक्रेसी किसी भी तरीके से अकाउंटेबल नहीं होना चाहता है। तो आप देखोगे कि कोड ऑफ कंडक्ट और इस तरह की बातें बुक्स में ही रह जाती हैं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, एक्चुअली में देयर इज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट। देखो जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया ना, इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि आप एक सर्टेन सम ऑफ मनी से ज्यादा का गिफ्ट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट यह भी कहता है कि अगर कोई भी गिफ्ट आपको दिया गया है, वो आपको नहीं दिया गया है, आपकी पोजीशन को दिया गया है, और क्योंकि वो आपके पोजीशन को दिया गया है तो वो आप क्या करोगे, दैट विल गो टू द ट्रेजरी। इट इज नॉट योर पर्सनल गिफ्ट, इट इज अ गिफ्ट ऑफ योर ट्रेजरी, है ना। तो अगर आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में देखोगे कि बहुत सारे गिफ्ट्स फ्रॉम पीपल हु मे यू मे नो देम, सम ऑफ इट मे सो हैपन दैट यू डोंट नो देम, बट यू आर गोइंग टू चाहोगे नहीं चाहोगे लेकिन गिफ्ट्स आते रहेंगे, इस तरह की चीजें रहेंगी। लेकिन उसको कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है इट्स नॉट योर्स, इट इज ट्रेजरीज गिफ्ट। सो वो स्टेट की ट्रेजरी में जमा होना चाहिए, आपके पास नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिविल सर्वेंट्स आर वेरी मच विलिंग टू यूज इट, है ना, दे आर डूइंग व्हाट दे आर यूजिंग इट। सो हाउ आर दे अकाउंटेबल, और आर दीज कंसिडर्ड टू बी वायलेशन? हमने तो यह भी पढ़ा है कि कोड ऑफ कंडक्ट तो एनफोर्सेबल है, और एनफोर्सेबल है तो इस केस में पनिशमेंट भी होना चाहिए। लेकिन क्या हम इस तरह के पनिशमेंट्स देखते हैं? हम नहीं देखते हैं। Okay, so these are basic problems that are associated with the implementation of code of conduct। इतना आसान नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि rigid behavioral guidelines may not be effective for dynamic governance situations। जहां पर डायनेमिक गवर्नेंस सिचुएशंस है, आपके गाइडलाइंस रिजिड हैं, आप ये कहते हो कि इन गाइडलाइंस को अमेंड नहीं किया जा सकता है, इसे एज इट इज एनफोर्स किया जाएगा। अब क्योंकि गवर्नेंस और सिचुएशन बहुत डायनामिक है, सच थिंग्स मे नॉट बी इफेक्टिव इन एप्लीकेशन ऑफ ड्यूरिंग रियल गवर्नेंस सिचुएशंस। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसका एग्जाम्पल समझो। एक पॉइंट आपने लिखा है, इट इज समथिंग विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रेजोल्यूशन ऑफ ethical dilemmas। Now, ethical dilemmas are
quite complex and resolving ethical dilemmas are not easy. इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, है ना. एथिकल डिलेमा क्या है? जब आपको पता है कि आपके पास जो चॉइसेस हैं वो दोनों ही सही हैं, और अगर आप एक को चूज कर रहे हो ओवर द अदर, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन व्हाट यू डोंट चूज, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट. सो दिस इज वेरी 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 कॉम्प्लेक्स. It is very complex. It's not a simple situation. And rigid behavioral guidelines are not capable of resolving complex ethical dilemmas. It is not possible for them to resolve complex ethical dilemmas. ठीक है, देखो, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमने लिया, तो उसी का एक एग्जाम्पल और टेकअप करते हैं. मान लो यू गेट एन इनपुट, आप किसी डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहे हो, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है जो ये कहता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक टेररिस्ट सेल एक्टिव है एंड हु इज प्लानिंग टू मे बी टारगेट सम वेरी इंपॉर्टेंट सिविलियन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, आपके पास ये इंटेलिजेंस इनपुट है. आपके पास ये इनपुट है कि वो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, आपके पास ये इनपुट है. आपने व्हेन यू स्टार्ट द पुलिस वर्क, पेट्रोलिंग शुरू करते हो, you start manning, you start showing presence in the public places and all of it. उसके बाद आप दो इंडिविजुअल्स को पकड़ते हो, two individuals who are caught with some material which are used for what? For IEDs, explosives जो होते हैं उनको बनाने में उन मटेरियल का यूज होता है. आपने दो इंडिविजुअल को पकड़ा है, आप उनको लेकर आते हो पुलिस स्टेशन में. अब आपके पास चॉइस है. चॉइस क्या है? या तो आप उनको प्रेशराइज करो, you use your techniques and accordingly get information from them. Secondly, you continue with the police work and take more proactive measures and maybe address the situation. आपके पास इतना टाइम है नहीं. इंटेलिजेंस इनपुट ये कहता है कि that the strike is imminent, बहुत जल्दी होने वाला है. अब ये सिचुएशन है. अब इस सिचुएशन में आपके पास चॉइस क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, पहला, you question them, maybe use some techniques which are not necessarily legal also, है ना. Sometimes those techniques are not what is allowed constitutionally. ये एक तरीका है आपके पास. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप पुलिस वर्क करते रहो प्रोएक्टिवली. maybe you end up finding an individual or catching someone, है ना. ये सिचुएशन है आपके पास. नाउ दिस इज अ डिलेमा. You are in a state of an ethical dilemma, because if you want to get information, the techniques that you adopt may be unconstitutional. Whereas if you continue the police work, you may not necessarily be able to extract proper intelligence, or for that matter be able to solve this particular problem. ये dilemma है. अब इसमें कोड ऑफ कंडक्ट क्या कर पाएगा? कोड ऑफ कंडक्ट तो रिजिड रूल्स है, आपको ये बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है. कोड ऑफ कंडक्ट अगर मान लो ये कहता है कि मे बी प्रोहिबिशन इज प्लेस्ड ऑन यूज ऑफ सम टेक्निक्स, और उसे आप यूज नहीं कर रहे हो, सो यू मे फेल आइदर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, और फॉर दैट मैटर बीइंग एबल टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर कंसर्न. यू मे फेल देयर, ना इधर से ना उधर से. हाउ डज द कोड ऑफ कंडक्ट रिजॉल्व दैट? The code of conduct does not necessarily resolve such a situation. ठीक है, it does not necessarily resolve such a situation, है ना. ये यूपीएससी में पूछा हुआ केस स्टडी है. 2016 मेंस एग्जामिनेशन, this same case study that I used, this same case study was asked, what do you do? मैंने बस उसे यहां पर यूज किया to address this very idea that it is not something which is, no, it is not something which is adequate
always to be able to resolve ethical dilemmas, क्योंकि governance today has become very complex and static rigid rules may be inadequate in addressing those governance related problems, complex governance related problems. ठीक है? So code of conduct seems to be it seems to be an instrument which theoretically looks good, and there are so many importance that may theoretically be attached to it, but practically it is not necessarily it's not necessarily an instrument which is very effective. Okay, please write this down. Challenges in its implementation. First point, inconsistency within this point you can write lack of uniform and consistent enforcement across departments, comma, it has been observed that there is selective application of the code. There is selective application of the code. Full stop. Second, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ रहे हो तो कोड ही लिखोगे ना, कि और कोई दूसरा टर्म तो लिखोगे नहीं. कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ रहे हो तो कोड लिखोगे. सेकेंड पॉइंट, एम्बिग्विटी इन एप्लीकेशन. Some rules within the code, COD, some rules within the code, COD, may be vague, 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 leading to differing interpretations and inconsistent application. Full stop. Third point, resistance from bureaucracy. As civil servants may resist strict rules perceiving them as constraints to their autonomy and freedom. Full stop. Next point, rigid rules in the code may not be effective in
in addressing complex governance situations, complex governance situation, therefore may not be adequate, guidelines for conduct, adequate guidelines for conduct. And the last point, lack of awareness, public officials may not be aware of all the provisions in the code leading to its violation, full stop. ठीक है? So these are the constraints or the problems that are there in the implementation of code of conduct. So we have understood what is code of conduct. We have seen what are the features of code of conduct. We have also seen what is its importance and what is its challenges. Okay. Now let's come to the next part, which is code of ethics. Code of ethics. We have talked about values, principles, specific behavior, guidelines. देखो, what we have studied till now is code of conduct. And how have we looked at code of conduct? We have said that code of conduct is what? Code of conduct is the behavioral guidelines. And while I was dictating the very beginning of it, I said specific behavioral guidelines is to be underlined, because what is important here is that it is specific. It is specific. That means exactly what do's and don'ts. What is the right behavior? It does not prescribe. Code of conduct does not prescribe values. Code of conduct prescribes the exact behavior which has to be followed. Exact behavior is what is prescribed.
है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या हमने एग्जाम्पल देखा दैट अ गिफ्ट विल नॉट बी एक्स वर्थ दिस मच विल बी एक्सेप्टेड, दैट्स एन एग्जैक्ट बिहेवियर what you're supposed to do. But code of ethics is unlike that. Code of ethics is also a guideline. So all of this is what? All of this is guidelines. The values can be guidelines, principles can be guidelines, and behavior, of course, specific behavior guidelines is definitely a guidelines. Okay, so all of this is guidelines, and code of conduct and code of ethics, code of conduct and code of ethics, code of conducts and code of ethics, both of this is guidelines. What is the difference? The difference is that where code of ethics is only values and principles, code of conduct provides exact behavioral guidelines. It provides exact behavioral guidelines. ठीक है, अब देखो, Second Administrative Reforms Commission submitted a report. The fourth report of the Second Administrative Reforms Commission, it was titled, Probity in Governance. The same topic that we are reading, that was basically what it was titled. और वहां पर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया था. ऑब्जर्वेशन ये था उनका, that Code of Conduct of Civil Servants that was devised in the 1960s, 70s and so on, those are today obsolete. वो जो है ना, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में वो एप्लीकेबल ही नहीं है. Today it is not applicable. It is not something which is any more relevant. It is not something which is any more applicable. In fact, they said that in order to make make them effective, what we need to do is we need to include code of ethics. So they recommended that civil servants today require code of ethics. But they did not just stop there. उन्होंने ये भी कहा था कि code of ethics should be prescribed for every institutions, the executive institutions, the legislative institution, as well as the judiciary. Judiciary should also have a code of conduct. They had prescribed that very idea. Clear? तो वापस से आते हैं, कोड ऑफ एथिक्स है क्या. एक सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है और इससे हम एक ब्रीफ क्लैरिटी हमें मिलती है कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में सिमिलैरिटीज क्या और डिफरेंसेस क्या. सिमिलैरिटी यह है कि दोनों ही गाइडलाइंस हैं, दोनों ही गाइडलाइंस हैं. कोड ऑफ कंडक्ट भी गाइडलाइंस है, कोड ऑफ एथिक्स भी गाइडलाइंस. बट हाउ आर दे डिफरेंट? व्हेन वी से कोड ऑफ कंडक्ट is specific behavioral guidelines, but code of ethics is not specific behavioral guidelines. Code of ethics is the values, the principles that should be upheld by institutions, and they are prescription of those values, they are prescription of those principles. That is what code of ethics is. ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट आपको यह कहता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है. कोड ऑफ एथिक्स आपसे ये नहीं कहता है. कोड ऑफ एथिक्स विल प्रोवाइड वैल्यू, सो दे विल एम्फसाइज ऑन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी. सो दे वुड से दैट अपहोल्डिंग इंटीग्रिटी, upholding commitment to public service, that is basically constitutional morality and constitutional values. That is what will be prescribed by code of ethics. They will not prescribe exact behavior. ठीक है, ये डिफरेंस है कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में. ठीक है, प्लीज राइट डाउन व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स.
code of ethics provides a moral framework. Code of ethics provides a moral framework for individuals and organizations to guide their behavior in line with ethical principles. In line with ethical principles. Ethical principles. Full stop. It establishes core values and broad principles. Core values and broad principles that promote integrity, fairness and respect for rule of law, especially in public services. Public services, full stop. Underline moral framework. First thing, underline moral framework. Then underline core values and broad principles. Core values and broad principles. This is what a code of ethics is. देखो, moral framework. What is the meaning of this term? Moral framework. बताओ मुझे. What is the meaning of this term? Moral framework. ये टर्म जो आपने लिखा है moral framework, इसका मतलब क्या है? It comes from inner conscience. Moral framework comes from inner conscience. जरूरी नहीं है. It highest form of ethical values is moral framework. जरूरी नहीं है. इसीलिए जरूरी नहीं है. और बताओ. What is moral framework? फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है? हाँ, एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर इज व्हाट इट मीन्स. मॉरल फ्रेमवर्क का मतलब है वेर यू आर गिवन ब्रॉड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू व्हाट मॉरल नो और फॉर दैट मैटर एथिकल एस्पेक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड. बस ये है. यही तो डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स है क्या? कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिक है. कोड ऑफ एथिक्स इज ब्रॉड. इट इज ब्रॉड फ्रेमवर्क. इट इज नॉट स्पेसिफिक. इट इज ब्रॉड फ्रेमवर्क. है ना? समवन हैज मेंशन्ड ब्लूप्रिंट. हाँ, एग्जैक्टली. स्ट्रक्चर क्या है? या जब हम कहते हैं इट्स अ मॉरल फ्रेमवर्क, इट्स अ ब्लूप्रिंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन से मॉरल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो है सही होने चाहिए. लेकिन वो स्पेसिफिक मॉरल बिहेवियर नहीं बताता है ना? जैसे हमने डिस्कस किया पहले भी, ऑनेस्टी. सो फॉर a civil any civil service organization, honesty is it's a very important moral principle. So it would mention honesty. Code of ethics will do what? Code of ethics will mention honesty. It will mention justice. It will mention such values. ये code of ethics का part होगा, है ना? Code of ethics आपको क्या करेगा? Just think of it as a civil servant. कोड ऑफ एथिक्स, एक सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ एथिक्स का कंटेंट क्या होगा?
एक सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ एथिक्स का कंटेंट ये होगा कि वो आपको ये कहेंगे कि फर्स्ट थिंग, यू एज अ सिविल सर्वेंट शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल स्टैंडर्ड्स, यू शुड फॉलो दैट। कोड ऑफ एथिक्स आपको यह कहेगा that as a civil servant you are supposed to uphold public interest. Code of ethics आपको यह कहेगा that as a civil servant you are supposed to remain politically neutral. Code of ethics आपको यह कहेगा कि as a civil servant, because you are a civil servant and not a part of the political domain, so political class, therefore you are supposed to do what? You are supposed to maintain anonymity. And you are supposed to be politically ideologically neutral. You are supposed to do that. Code of ethics आपको ये कहेगा that as a civil servant you are supposed to maintain professionalism and you are supposed to maintain competence. यानी वो स्पेसिफिक बिहेवियर्स आपको नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क आपको बता रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स, है ना। Now, the fill in the blanks is what you will do from your side, keeping in view what principles are prescribed in code of ethics. तो अगर वो ये कहते हैं कि constitutional values to be upheld, तो आप जानते हो कि constitutional values क्या है, and accordingly your behavior should not be a contradiction to those constitutional values. अगर कहा जाता है political neutrality, so you know what political neutrality means. Your behavior should not be in contradiction to political neutrality. लेकिन वो आपको ये नहीं बता रहा है कि आप कोई पॉलिटिकल इवेंट अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए के फेवर में कैंपेनिंग नहीं करोगे, ये बात नहीं बताया जा रहा। ये कहां पर होगा आपको? इट विल बी अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइन, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, नॉट कोड ऑफ एथिक्स, है ना। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। और यही बात सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कह रहा है कि देखो स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है ना वो आउटडेटेड है, वो ऑब्सोलीट हो सकते हैं क्योंकि टुडे थिंग्स हैव चेंज्ड, सो देयर इज नो नीड फॉर दैट स्पेसिफिक गाइडलाइंस। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन सेज कि आपको सिविल सर्वेंट्स को ब्रॉड गाइडलाइंस देने हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस, ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर आपको वो बताना है। इसके अलावा एंड दे डोंट जस्ट लिमिट देयर सजेशंस टू ओनली द एग्जीक्यूटिव, दे गो बियॉन्ड इट। उन्होंने कहा लेजिस्लेचर्स के लिए भी होना चाहिए और जुडिशरी के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। क्लियर? दिस इज व्हाट कोड ऑफ एथिक्स इज। हैव यू अंडरस्टूड दिस आइडिया? राइट डाउन फीचर्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। First point, purpose. To guide decision making in situations involving moral dilemmas, situations involving moral dilemmas, full stop. To promote self-regulation, based on ethical principles, and to provide guidelines for ethical behavior, emphasizing on values such as honesty, justice,
fairness, etc. Second point, ethical principles. Ethical principles. Ethical principles prescribed in code of ethics. Prescribed in code of ethics are integrity, impartiality, accountability and transparency, and public interest. Full stop. Third point, scope. जब हम कोड ऑफ एथिक्स, ये यू हैव टू लिसन टू मी, ये लिखना नहीं है, जब हम कैसे लिखोगे मतलब, जब हम कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ रहे थे तो कोड ऑफ कंडक्ट में हमने स्कोप में ये देखा था कि इट इज एनफोर्सेबल. व्हाट डू यू थिंक, इज कोड ऑफ एथिक्स एनफोर्सेबल? व्हाई? It is based on values and principles. It does not provide specific behavioral guidelines. And because it does not provide specific behavioral guidelines, therefore code of ethics is not enforceable. ठीक है? Write this down. As code of ethics deals with values and covers a wide range of situations, therefore it is not enforceable, but requires ethical consideration. Okay, so that is where we are going to end today. There are two discussions left here, of course, importance and challenges part. After that I will compare code of ethics and code of conduct. ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है. Code of conduct, what is the correlation between code of conduct and code of ethics? We'll see that and we will then move on to the next part. अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो यहां पर 3 सब टॉपिक्स रिमेनिंग है. सबसे पहला टॉपिक जो रिमेनिंग है वो है सिटीजन्स चार्टर. So we will talk about that. We'll talk about transparency and information sharing, and then we'll talk about challenges of corruption. ये 3 topics remaining है. So most probably by Tuesday we will be ending our discussion on probity and governance topic that is there. Probity in governance. ठीक है? That's it for today. Thank you.